Arvind Mishra has been a very dear friend of mine. Way back, I remember, like when I had started this course, I think he's a very dear friend because he was my immediate junior, and though we had a senior junior kind of a relationship, but by the end of our tenure, with the end of my tenure at MTN, we had become very good friends, especially when we went on a tour, and we used to really sing along. So we had a very wonderful memories of each other, I'm sure. And obviously, he continued doing his course 1 year after me. But in the meanwhile, I joined as a faculty here. So again, our friendship continued over that time, and we have kept in touch in between. So it's very nice to know that Mr. Mishra has done so well for himself and established a name in the corporate field as a trainer, as a leadership coach. And he has a vast experience of over 24 years in this field. And he has been training the corporate sectors. There are big names like Bajaj Alliance, and there are several in the list. I'll be sharing that the profile with all my students very soon, Arvind. And he has done not only brilliantly for himself as a professional person, but as a human being, he is, I think, one of the nicest person I've met. His son is one of the national champions in badminton, and we keep hearing stories about your son, and he's recently just also had a birthday. So that's a different story. But my dear students, it is a great occasion today to reconnect with Arvind, uh, especially when we get to share so many of our experiences with all of you, so that you can also create your own places in the industry. In whichever field you select for yourself, I'm sure you will gain a lot from today's session. So I hand over to you, Arvind Mishra, the students of your juniors, in fact, of the current batches. Some of them are in the senior batch, they are in the final year, some of them are in the second semesters, the postgraduate students, as well as the undergraduate students, as well as we have if you remember, we had PTM, a paper in BA. So some of these students have also joined us from the BA course who are doing the TTM. And I'm sure that faculty is also there. I can see Mr. Suyash Yadav, Mr. Amar Tiwari, and I can see Dr. Amar Tiwari and Dr. Suyash Yadav. Sorry, they are doctors now. And I can also see Sabina Rizvi, who has joined us. They are all faculty here, and an array of students in front of you. So I'm sure it's going to be a very good interaction and a session with you. So I hand it over to you, Arvind. And I'm also eagerly looking forward to this session. Okay, thank you, Anupma. Namaskaram to all of you, everyone who's sitting here. And I welcome you all on behalf of ITS and Institute of Tourism Studies, Lucknow University. And मैं सही बता रहा हूँ, कसम से इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन तो मैं जब स्टूडेंट था तो मेरा कभी नहीं हुआ ऐसा ही. So it's a privilege to be a part of the institute where you have been as a student. I remember across the road, I have been studying in Colvin Talukdas College. पुरानी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ठीक सड़क पार करके ही है. तो वहां पे I went there and I took a session from how to motivate teachers, how to motivate and tell them how to do it and be a better teacher. And there were approximately 5 teachers. Obviously, मेरे time के teachers ज़्यादातर retire हो गए थे. लेकिन there were 5 teachers who were still there. And they told me कि अरविंद अगर तुम्हारे जैसा कोई बंदा हमें पहले मिल गया होता तो शायद we would have been a better teacher. So it's always been a fun when you go to that institute where you have been there as a student. And my profound gratitude to God, to Almighty. मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मौका मुझे दिया है, वो शायद मुझे एक इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे आपके सामने आ सकूँ, कुछ बोल सकूँ. तो I thank all of you along with God. And आज का जो हमारा सेशन रहेगा, ज्ञान की बातें बहुत होती रहती है. Today we will not talk about much of knowledge and ज्ञान and everything. कुछ हम लोग डिस्कशंस करेंगे, डे टू डे हम लोग बातचीत करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. सो मैं चाहूंगा कि मैं होस्ट राइट्स चाहता हूं, तो कैन एनीवन गिव मी द होस्ट राइट्स, बिकॉज कुछ मेरे को शेयर करनी है अपनी पीपीटीज वगैरह. सो कैन आई गेट दैट?
Can you make me a co-host? That'll do. I've made you the host. Yes, I've I'm a made you. host now. I can see that, right? So I'm a host now, and I'm going to share this thing with you, right? Yes. So I hope this screen is visible to you. Can I have a response in the chat box if it's visible to you? Yes, अगर yes, दिखाई yes. दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है. Great, thank you Anupma. That was so nice of you. So जहाँ पे जैसा ही आपको दिख रहा है इस पे लिखा हुआ है Welcome to the Intelligent Choices Series 1, one day or day one, right? So अक्सर हम लोग सोचते हैं कि एक दिन आएगा और मैं ये काम करके दिखाऊंगा, और कुछ लोग सोचते हैं today is going to be the day one when I'm going to start this day. So whether one day I'm going to do this or this is going to be the day one, this is just a matter of choice, right? तो आज जरा इसी के बारे में बात करेंगे, one day और day one इन दोनों में क्या डिफरेंस है, right? तो इसी के बारे में बात करते हैं और आगे जरा, और ये जो परिचर्चा रहेगी it will be more kind of a dialogue than a monologue. तो डायलॉग कुछ इस तरीके का रहेगा कि I'll be speaking और मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स देते रहें, बिकॉज इट इज योर एनर्जी विच मेक्स मी लाइव एंड एनर्जेटिक. अगर आप लोग की एनर्जी मेरे साथ नहीं रहेगी तो शायद मैं एनर्जेटिक नहीं रहूंगा 1 घंटे तक. तो आपकी एनर्जी मुझे चाहिए होगी. आपकी एनर्जी मुझे कैसे मिलेगी? जब आप चैट बॉक्स में अपने रिस्पॉन्सेस डालेंगे तब मुझे पता लगेगा यस यू ऑल गाइज आर एनर्जेटिक. और मैं चाहता हूं कि जो लेगेसी हम लोग 1995-97 में छोड़ के गए थे वो लेगेसी यहाँ आज भी मेंटेन है या नहीं है. हम लोग तो बहुत खतरनाक तरीके से एनर्जेटिक रहते थे. अगर मॉक और रॉक सेशन होता था तो गिटार भी, हाथ में गिटार नहीं होता था लेकिन गिटार बजाने का एक्शन इतना शानदार करते थे कि सामने वालों को एमटीए को फर्स्ट प्राइज देना ही पड़ा था. जो हम लोग का क्षितिज में जो 27 सितंबर को होता है उसमें भी ऑल वन द फर्स्ट प्राइज जस्ट by the amount of energy we dictated. So I just want to see कि वो एनर्जी आज भी है या नहीं है. So एनर्जी दिखानी है, इज्जत का सवाल है, राइट? ग्रेट. सो आगे बढ़ते हैं. और जैसा कि अनुपमा ने जो है हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था मेरा अबाउट मी, तो थोड़ा सा बताऊं कि एक ट्रेनर को हम क्यों सुने. तो भाई ठीक है, अनुपमा जी ने कहा कि सुनना चाहिए, सीनियर हैं इसलिए लोग सुन लेते हैं. एक लोग किसी ने कहा कि भाई रिजवी साहब ने कहा कि भाई अच्छे आदमी है, सुन लिया जाए, इज अ गुड जेंटलमैन. लेकिन एक होता है कि हाँ ठीक है इतने लोगों ने कहा तो ठीक है, ऑन करके मोबाइल में बैठ गए. अब ऑन करके बैठे तो हैं मोबाइल में लेकिन अटेंटिव है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो व्हाई शुड यू शुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स अ पर्सन. कि किसी ट्रेनर या किसी इंडिविजुअल के लिए आपको अटेंटिव क्यों रहना है, उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं. सबसे पहले दैट पर्सन शुड बी टेक्निकली क्वालिफाइड. उसके अंदर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है या नहीं. सो आई विल टेल यू दैट आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड डिजाइन थिंकिंग प्रैक्टिशनर एंड फैसिलिटेटर. सो इंटरनेशनली सर्टिफाइड इसलिए क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सर्टिफिकेशन हुआ है. और डिजाइन थिंकिंग प्रैक्टिशनर, डिजाइन थिंकिंग प्रैक्टिशनर में मैं आपको बताना चाहूंगा आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड डिजाइन थिंकिंग इनटू द टूरिज्म इंडस्ट्री. दैट इज विद कर्टसी विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट नोएडा. और उसके साथ मिलकर हम लोगों ने डिजाइन थिंकिंग को एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी बनाया है. और वी हैव स्टार्टेड डिजाइन थिंकिंग एंड हाउ टू अप्लाई दैट, राइट? और आई एम आल्सो डूइंग लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स विद द टूरिज्म इंडस्ट्री पीपल कि किस प्रकार से डिजाइन थिंकिंग को वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने कस्टमर को विन ओवर करने के लिए यूज करते हैं, राइट? सो दैट्स. और डिजाइन थिंकिंग क्या होती है ये बताने के लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा किसी और वर्कशॉप में, लेकिन फिलहाल अगर उसके बारे में बताऊंगा तो काफी समय उसी में निकल जाएगा, राइट? देन द अदर थिंग इज आई एम अ गैलप सर्टिफाइड क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर कोच. गैलप सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है जो कि वो एक सर्टिफाइड बॉडी है. और क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर कोच होते हैं डॉन क्लिफ्टन साहब, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि अगर हम अपनी ताकत पे अर्थात अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी वीकनेस को सुधारेंगे. तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं अपने आप को बेहतर करने के. पहला ऑप्शन ये होता है कि अपनी जो कमियां हैं उनको बेहतर कर लें, और दूसरा ऑप्शन होता है कि जो हमारी ताकत है उसको बढ़ा लें. तो स्ट्रेंथ फाइंडर कोच जो प्रोग्राम है ये कहता है कि अपनी ताकत को पहचानो और उसको आगे बढ़ो. तो इसके तहत मैं लोगों की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में उनकी हेल्प करता हूं और उनके लिए आगे का पूरी लाइफ का एक चार्ट भी बनाते हैं. दैट्स व्हाट आई डू विद दैट, राइट? तो ये तो हो गया हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के बारे में. फिर जरा देखें कि भाई अनुभव है या नहीं है. ठीक है, टेक्निकली क्वालिफाइड तो है, पढ़ लिख लिया है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है, या ऐसे ही आगे बात करने. नहीं भाई, एक्सपीरियंस भी है. तो
I'm a veteran of 600 plus training workshops and trained 20,000 plus. ये number अब पुराने हो चुके हैं. The number has gone up to 25,000. I've trained approximately 25,000 plus professionals, and not only trained, I'm also an achiever in sales in FMCG in the companies like Procter and Gamble, FC, Cadbury's, Parle Agro, Unicharm, Telecom में Airtel, Tata Communications, and Vodafone, so on and so forth. और actually अगर introduce करें तो I am a salesperson who gradually transformed into training professional. और मेरी जो core competency हैं, they are the real time practically implementable concepts that too in a manner it is experiential मतलब आप उसको अनुभव भी कर सकते हैं, and it is understandable and easy to replicate. वो भी हम लोग देखेंगे आने वाले समय में. और फिर ये भी होता है कि भाई किसके साथ आप जुड़ रहे हैं, किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने काम किया है. तो जाहिर सी बात है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी लिस्ट है वो है HDFC, SBI, LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, महिंद्रा फाइनेंस, वोल्वो आइशर, स्वराज ट्रैक्टर्स, अशोक लीलैंड वगैरह वगैरह. लगभग 53 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें MNCs भी हैं, कॉर्पोरेट्स भी हैं और SMEs भी हैं. राइट. तो इन सभी लोगों के साथ काम किया है और इन सब लोगों के साथ जो काम किया है, जो अनुभव आया है और जो काबिलियत आई है, उम्मीद ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आज के सेशन में या आने वाले अगर हम सेशन में साथ बैठते हैं तो उससे हम लोग एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो पाएंगे. राइट. सो दिस वाज अबाउट मी. और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक रूल्स रख लेते हैं. राइट. तो आज के अगले 1 घंटे का बेसिक रूल 4 है. नंबर 1, एक्टिव पार्टिसिपेशन. आई एम स्पेशली कॉलिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन बिकॉज मैं किसी भी पार्टिसिपेंट से पूछ सकता हूं कि भाई इसके से आप क्या समझते हैं या इसके बारे में आपकी क्या राय है, एंड व्हाट डू यू से. राइट. सो इसलिए आपको तैयार रहना है और किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में हो कि जवाब देने की अवस्था में ना हो. तो यू ऑल हैव टू बी रेडी एंड अलर्ट. तो एक्टिव पार्टिसिपेशन. नंबर 2, मेक नोट्स. अगर कोई बात बढ़िया लग जाए तो उसका नोट्स बना लीजिएगा. राइट. नंबर 3, अपलॉड. अगर कोई बात मेरी अच्छी लगे तो प्लीज अपलॉड. मुझे अच्छा लगता है कोई तारीफ करता है, नहीं भी करता है तब भी अच्छा लगता है. और अगर मुझे आपकी कोई बात अच्छी लगेगी या कोई आपने कोई बात बताई तो डेफिनेटली आई विल अपलॉड टू इट. राइट. और मुझे लग रहा है कोई शायद बच्चा भी है यहाँ पे, बहुत सारे एनोटेशन कर रहे हैं यहाँ पे. सो आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट डू एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. राइट. एंड द 4th थिंग इज पोस्चर. अगर आप सही पोस्चर में बैठे होंगे, अगर आप वहां पे लेटे नहीं होंगे या कोई इस तरीके से बैठ जाता है, कभी कोई ऐसे बैठा होता है, तो जाहिर सी बात है, लोग कहा जाता है ना कि हम सोते पहले हैं या लेटते पहले हैं. जाहिर सी बात है कोई पहले सोता नहीं है, पहले लेटता है फिर नींद आती है. राइट. सो इट इज अ पोस्चर व्हिच डिफाइंस what kind of next stage is going to be. So if you sit in the right posture, तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन अपने आप बना रहेगा. ये छोटी सी बेसिक रूल बुक है जो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ. और आज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हमारे नेता भी थे, हमारे लीडर भी थे. और नॉट ओनली द लीडर, he was a very well known scientist also, and his name was Nikhil. Please don't write on the screen. Right. Great. तो आज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने सुप्रसिद्ध राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के एक कोट से. और उन्होंने कहा था, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. मेरा सवाल आप लोगों से है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस और डिसएग्री विद दिस? अगर एग्री करते हैं तो प्लीज टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स, और डिसएग्री करते हैं तो प्लीज टाइप डिसएग्री इन द चैट बॉक्स. लेट्स सी सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स quickly, and I'm going to give you approximately 1 to 2 minutes of time. Let's see how many people can put their answers and quotes into the chat box. इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. Okay, Sakshi says agree sir. Ashmita Sushmita says agree. Rishi says agree. Masti Khor Tripathi says agree. Okay, Rudra Pratap Singh is also agreeing to it. Akanksha Mehta agrees. Nikhil also agrees, and so does Jyoti Rajak, and Devendra ji also agrees. Nikhil ji also agrees, right? Okay, so Anna, okay, Anna also agrees with it. Pragya also agrees with it. Faizan Khan, yes, you also agree. Great, I can see lots of people agreeing to it. Great. So, अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम लोग अगर किसी महान व्यक्ति की कोई बात होती है तो उसके साथ एग्री कर जाते हैं. तो जरा समझते हैं कि क्या हमें सही में इसके साथ एग्री करना चाहिए या डिसएग्री करना चाहिए. अभी चलिए इस बात को हम अलग रख देते हैं. हम अगली साइड पे जाते हैं और एक क्रिकेट की एनालॉजी है उससे जरा कुछ समझने की कोशिश करते हैं.
मेरा सवाल आप लोगों से ये है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने चैट बॉक्स में उस सवाल का जवाब लिखें, राइट। तो सवाल मेरा आप लोगों से ये है, मुझे उन बैट्समैन, बैट्समैन बोले तो बल्लेबाज, उन बैट्समैन के नाम बताइए जिनके नाम पर ज्यादातर रिकॉर्ड्स हैं। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दोज बैट्समैन जिनके नाम पे ज्यादातर रिकॉर्ड्स हैं। जवाब देने से पहले 2 मिनट रुक जाइए, फिर से समझ लीजिए। मुझे उन बैट्समैन के, उन बल्लेबाजों के नाम चाहिए जिनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। जैसे उनके नाम पे गूगल टाइप करेंगे, गूगल में नाम टाइप करेंगे तो 8-10 रिकॉर्ड्स वैसे ही आ जाए। मुझे 1-2 रिकॉर्ड्स वाले नहीं चाहिए, मुझे वो बैट्समैन चाहिए जिनके पास खूब सारे रिकॉर्ड्स हैं। आई कैन सी lots of energies are coming there. Yes, शगुन से सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सॉरी देव, MS धोनी के पास ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है। हाँ, कैप्टन अच्छा, रिकी पॉन्टिंग, यस, सचिन एंड विराट कोहली, सचिन, विराट कोहली, द्रविड़, सौरभ, AB डिविलियर्स, यस, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, मैथ्यू हेडन, राइट, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, यस यस, Sachin and Virat Kohli, Vivian Richards, yes, Vivian Richards is there, Sachin Tendulkar, Virat Kohli, great. Brian Lara, yes, how can Kapil Dev Tripathi ji, Kapil Dev के पास bowling records and batting records इतने ज्यादा नहीं है। मेरा सवाल था batting records, इसीलिए मैंने batsman का चेहरा बनाया हुआ। Oh yes, Rishi, Chris Gayle, yes, Isha, AB de Villiers, great. As I can see, there are lots and lots of answers, great. So मैंने कुछ answers जो आप लोगों ने बताए हैं, उन आंसर्स को प्रिय ओज, तो here's a list by रचित, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, शेन वॉटसन, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली, AB डिविलियर्स। बस मैं इसमें से मैं MS धोनी को हटाऊंगा क्योंकि इसके नाम कैप्टेंसी के रिकॉर्ड ज्यादा है, बैटिंग के इतने नहीं है, विकेट कीपिंग रिकॉर्ड ज्यादा है। ही इज अ गुड कैप्टन, ही इज अ गुड बैट्समैन, बट रिकॉर्ड्स उसके पास इतने नहीं है। कुमार संगकारा, क्रिस गेल, मार्क वॉग, यस, डॉन ब्रैडमैन, यस अमन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो मैंने जल्दी से इन जवाबों को जरा एक लिस्ट में डाल भी लिया है, लिस्ट आपके सामने प्रदर्शित होती है ये, राइट। सो दीज आर द फ्यू नेम्स व्हिच आर, जो आप लोगों ने बताए हैं, मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगा के पहले से लिख लिए थे। एज यू कैन सी द नेम ऑफ ए फ्यू बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर आप लोगों ने बताया था, डॉन ब्रैडमैन भी है नाम आपने बताया, विराट कोहली का नाम भी आया था, वीरेंद्र सहवाग का नाम भी आया था, सनी जयसूर्या का नाम आया, रोहित शर्मा, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, क्रिस गेल, यस, नाम आया था, सौरव गांगुली का नाम नहीं आया था, चलिए मैंने लिख दिया, बट आई थिंक यू विल एग्री टू इट, राइट, ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे इन सारे बैट्समैन के जो आपने नाम मुझे बताए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन ऑल दीज बैट्समैन। इन सभी बैट्समैन के नाम यहाँ पे लिखे। नाउ यू हैव टू जस्ट लुक एट दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में देख के आपको ये बताना है व्हाट इज द कॉमन थिंग इन बिटवीन ऑल दीज बैट्समैन। Have a look at the list, think for it. 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगा, तब के लिए मैं अपना वीडियो भी ऑफ कर लूंगा, so that you can concentrate on this list. And 1 मिनट में आप concentrate करके बताइए अपने chat box में what is common in between all of them. और मैं वीडियो ऑफ करता हूं and the time starts now. 1 minute. Okay, as I can see that lots of people have already started answering. There are few people who have raised their hands. So let's see who have raised their hands. Let's see the responses, right? Mastikhor Tripathi. Okay, yes. Let's read the answers. Mastikhor Tripathi says all are batsmen. भाई सवाल ही यही था, बैट्समैन के नाम बताने तो ऑल बैट्समैन तो होंगे ही होंगे। देन निखिल says they are batsmen, yes, the same reason. Rachit Thakur says all of them are openers. Most of them are openers, number 2, number 3 batsmen. Dr. Amar Kumar Tiwari. Not all are openers. Yes. Okay. As I can see, I think the answer has come right from Mr. Rachit Thakur or Dr. Aman Mani Kumar Tiwari का अगर हम आंसर देखें तो the answer is absolutely correct, right? If you can see that most of, अगर आप इनके बैटिंग ऑर्डर को ऑब्जर्व करें, so most of them are either the openers or
they are first down or second down or third down batsman. First down आप सभी जानते हो पहला विकेट गिरा और बैटिंग करने आ गए, right? So as you can see, most of them are either openers or the first down batsman. Absolutely right. मैं अमर कुमार तिवारी जी and Rachit Thakur, congratulations, you have given the right answers. I think we can show the clap, clap, clap. We can write clap, clap, clap for Mr. Amar and Mr. Rachit. Great answer, great. And Akash Gupta has raised his hand. So Akash, you want to say something? Yes, Akash, do you want to say something? Akash, cannot unmute you. Great. So, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये सारे बैट्समैन या तो ओपनर हैं या फर्स्ट डाउन है या सेकंड डाउन. सो होता क्या था, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या डिसाइड किया, रिकॉर्ड्स बनाना या ओपनिंग करना. एक्चुअली रिकॉर्ड बनाना तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वो तो रिजल्ट होता है. इन्होंने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू डू द ओपनिंग. और ओपनिंग जब क्रिकेट में की जाती है तो अगर आप लोगों ने किसी ने भी लेदर की बॉल से क्रिकेट खेला हो तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस इट इज, स्पेशली एट द इंटरनेशनल लेवल. When the ballers are coming at us and throwing a ball at you at a speed of 150 kilometers per hour, the ball can even kill you if it hits at the wrong points, right? So, but these guys said, okay, let's whatever the bowler is throwing at us, we are going to make the ball old, and in the process, we are going to make the ball. The ball is going to lose the shine, and all the stroke makers who are going to come later on, they can make the runs. राइट. तो इन लोगों ने क्या कहा, हम ओपनिंग करेंगे और उस बॉल को पुराना कर देंगे. और ऑब्वियस सी बात है, जब इन्होंने कहा कि हम ओपनिंग करेंगे तो हुआ क्या, एज अ रिजल्ट व्हेन दे वेंट आउट और 50 में से 30 ओवर तो ये खेल गए. इफ द टारगेट वाज अबाउट 300 रन्स, तो आउट ऑफ दो 300 रन्स these guys made, the openers made approximately 200 runs or 100 runs, 150 runs. They got more opportunity to create the scores and to create the records, and as the result of it, they created most of the records, and most of the records are there in their bags. और क्या हुआ, ये कौन थे, they were the starters. ये वो लोग थे जो कोशिश करने वाले थे, ये वो लोग थे जो इनिशिएटर्स थे, राइट. तो जिन्होंने अपने आपको इनिशिएट किया, स्टार्ट किया और जो प्रोएक्टिव रहे, दे गॉट मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स इन देयर नेम. और जो बाकी बैट्समैन थे जैसे युवराज सिंह है या महेंद्र सिंह धोनी है, डिस्पाइट देम बीइंग अ फैंटास्टिक बैट्समैन, उनके पास इतने रिकॉर्ड्स नहीं आ पाए और उनको उन रिकॉर्ड से काम चलाना पड़ा जो रिकॉर्ड्स इनसे बच गए, राइट. तो अगर देखा जाए तो हमारे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. Can I request all of you to please unmute yourself? Yes, great. So जैसा कि आपने अभी देखा इस एग्जांपल के साथ, इस एनालॉजी के साथ, कि ये इंतजार करने वाले लोग थे, ये ओपनर्स थे, फर्स्ट डाउन थे, इन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए, इनसे जो बचे हुए रिकॉर्ड्स थे वो उनको मिल गए जो वेट कर रहे थे इनके आउट होने का, पैड पहन के पवेलियन के अंदर. तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिला जितना कोशिश करने वालों ने छोड़ दिया. और क्योंकि हम लोग लखनऊ के हैं तो लखनऊ के रहने वाले लोग ये भी कह सकते हैं कि इंतजार करने वालों को उतनी ही मिलती है मैखाने में जितनी कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं पैमाने में, राइट. सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आज से अगर हम लोगों ने ये सोच लिया कि हम लोग को इंतजार करना है, कोशिश करना है, तो इट कैन बी अ लाइफ चेंजर फॉर एनी वन ऑफ यू. और ये चीज डिसाइड करती है कि हम लोगों को प्रोएक्टिव बनना है या रिएक्टिव बनना है. ऑल दीज बैट्समैन, दीज आर ऑल प्रोएक्टिव पीपल, एंड अदर पीपल हु आर वेटिंग इनसाइड द पेविलियन, दे वर द रिएक्टिव पीपल, राइट. सो आज हम बात करने जा रहे हैं अगले कुछ समय में, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोएक्टिव पीपल एंड रिएक्टिव पीपल. एक छोटी सी स्टोरी है मुर्गी की, इसको हम एग स्टोरी कहते हैं, और इसको हमने यहाँ पे एक टाइटल दिया है कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, राइट. इट्स अ लाइन ऑफ द फेमस सॉन्ग which you all know, जो कि हम लोगों ने 3 Idiots में देखा था. इससे पहले मैं कुछ चैट्स देखना चाहूंगा. देयर आर few chats which have come. Dev Bhagwani says common is that they play for their respective countries. Yes, Dev, obviously every person plays for his respective country. So जो सही आंसर था वो यही था कि they are either the opener or the first down or second down. They are all international players. Yes, obviously. Not so obvious answer, but their passion and determination for the game which lead them to being the record holders. Yes, Yash, to be an extent, अगर ये जो passion इनके पास भी है,
पैशन मेरे ख्याल से उन बैट्समैन के पास भी है जो शायद क्या कहते हैं ओपनिंग करने नहीं आया, फर्स्ट डाउन या थर्ड डाउन नहीं आए। पैशन मेरे ख्याल से यशपाल शर्मा या गुंडप्पा विश्वनाथ के पास भी उतना ही था, बट उनके पास इतने रिकॉर्ड्स नहीं पाए। देयर पैशन couldn't fetch them the records which happened with these guys, right? Okay, so I'll move ahead और हम जरा अगली एग स्टोरी के बारे में देखते हैं। तो एग स्टोरी में अगर हम देखेंगे, I will share a picture with you for the egg. अगर आप देखिए यहाँ पे अंडे के ऊपर over the egg, the pressure has been exerted from outside. बाहर से प्रेशर पड़ रहा है। जब बाहर से प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? The egg is opened up, right? And the egg is opened up, the yolk comes out, and the egg is out there. The yolk has come out. और अगर आप फोर्थ पिक्चर में देखें तो बाकी 4 अंडे मिलके एक जो अंडा जो टूट गया है उसका गम मना रहे हैं। They are sad about it, right? So हुआ क्या? That egg is finished. या तो इसका ऑमलेट बनेगा या किसकी कोई हाफ फ्राइड बना लेगा या क्या इसको इसकी भुर्जी बना लेगा, right? This is what happens when the pressure is exerted from the outside, right? Or this is what happens when we do a particular job out of the reactions from outside. जब हम किसी काम के लिए रिएक्टिव होते हैं तब ऐसा होता है। अब जब हम देखते हैं जब हम रिएक्टिव नहीं है तो प्रोएक्टिव होते हैं, जब हमारी अंदर की फोर्सेस जो होती हैं वो अगर हमें पावर देती हैं तो क्या होता है? This is the picture of energy within. जैसा कि आप देख रहे हैं, in the first picture the egg is breaking up, right? And क्यों ब्रेक हो रहा है? Because the forces are coming from inside. सेकंड पिक्चर में आपने देखा थोड़ा और ब्रेक हो गया, थर्ड पिक्चर में आपने देखा ये और फर्दर ब्रेक हो गया, और फोर्थ पिक्चर में आपने देखा the chicken has come out, right? Or you can say the life has come out. So when the forces are from within, जब energies हमारे अंदर से आती हैं, जब internal forces, internal energies हमें activate करती हैं, then it is the life which comes out. और जब हमें बाहर का pressure activate करता है, then it is the death, right? So it's all up to you to have the internal forces to motivate you or the outside forces to motivate you, or you can say whether it's a proactive or the reactive sessions, right? So that's the difference between the energy within and the energy outside. और जैसा कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा होगा, what do the proactive people do? They become smart. There's an old crow. The story आप सभी जानते होंगे। एक प्यासा कौवा था, एक घड़े में पानी था, वो कौवा आया, उसने थोड़े थोड़े पत्थर डाल के पानी को ऊपर लिया और पानी ऊपर आया, उसने पी लिया। Come on, who has got time now, right? Then there's a modern crow. He says, let's be proactive. बहुत दिनों से मैं पत्थर डाल रहा हूँ, let's be something smart. वो एक गया पेप्सी की शॉप पे, उसने पेप्सी की शॉप पे गया, जल्दी से एक पेप्सी का जो स्ट्रॉ होता था वो उठाया। He went to the घड़ा और घड़े के अंदर उसने पेप्सी के स्ट्रॉ को डाला और खट से पानी पी गया, right? Update yourself, be proactive. It can save you a lot of extra effort, right? So this is what happens. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो they are the two differentiators. There are two kinds of people. One is the proactive person, right? And the proactive person works on his values. Proactive जो व्यक्ति होता है उसके लिए values ज्यादा important होती हैं। जो reactive व्यक्ति होता है उसके लिए ambience और external factors ज्यादा important होते हैं। For instance, जो reactive व्यक्ति होगा, अगर बाहर पानी बरस रहा होगा और उसको बाहर वॉक करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए जाना होगा, तो might be he will say, oh it's raining outside, I'll not go out today. Whereas जो व्यक्ति proactive होगा वो क्या करेगा? He will say, so what if it's raining? If I have to walk, I have to walk. This is my determination, and he will go out. The rains cannot deter him, right? So a proactive person works on his values, and a reactive person works on his ambience and external factors. Proactive person works on his imagination. एक proactive व्यक्ति के लिए imaginations बहुत important होते हैं। उसकी अपनी imagination होती है, उसकी dreams होती हैं। He follows his dreams. Sachin Tendulkar always followed his dreams. उसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन रिएक्टिव लोग जो होते हैं वो हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे बात करते हैं। ओके भाई देखिए, क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता है, कई भाई फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अपने बच्चे को क्रिकेट खिला रहे हैं तो ऐसा करिए, थोड़ा सा उसको पढ़ाई वढ़ाई में भी कुछ करा दीजिए, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है, राइट? So reactive people always worry about the past experiences, where the proactive people work on their imagination. They work on their dreams.
they imagine their dreams. वो देखते हैं अपने आप को कि they are sitting at a particular place, they are sitting at a particular platform, and based on their dreams and imagination, they actually follow their entire, and they make their entire plan about, right? Then proactive log jo hote hain, they are always having very high self awareness, and reactive jo hote hain, they have got a very low self awareness. Why it happens? Because whenever we choose between जब भी कोई चीज सामने आती है, there's a stimuli and there's a response. Between a stimuli and a response, there is empty space. और जो empty space होता है, this is the space जो हमें help करता है कि हम उसके बारे में अपना एक choice ले सकें, right? So जो इसमें हम जो हमारी high self awareness होती है, वो हमें help करती है to make a better decision, to make a proactive decision, right? कुछ हम देखें, अगर जो proactive होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उनका कुछ कहना है आई चूज टू. फॉर इंस्टेंस, if a cricketer who is going to open the innings, he will say I'll choose to open the innings, right? अगर आपको कोई काम करना होगा, you will say कि I want to open a company of tour operations, so I choose to open the company of tour operations. जो reactive होगा वो कहेगा I have to. अब MTA कर लिया है तो I have to do it, right? So there's lots of difference between I choose to and I have to, right? जो proactive होते हैं उनकी language क्या होती है? I prefer to do it, right? Reactive people say I must do it. They are compelled, right? Proactive people say I suggest. Reactive says if only you can do this. They've got lots of conditions to it. Proactive people say I will. Reactive people say no, I can't. Proactive people say today is the day one, and the reactive people say one day I will start, right? So if you want to be proactive in this world, if you want to be successful in this world, be proactive. Don't be reactive to the people. और जैसा कि एक बड़ा मजेदार चीज होती है, there are lots of people who get inspired when others appreciate them. जब और लोग उनकी तारीफ करते हैं तो उससे इंस्पायर हो जाते हैं, right? So कई लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों में से भी होंगे, शायद मैं भी हूं. So if someone appreciates you, then you get inspired. You do a good job. When you get inspired, you do a good job. अगर इसका उल्टा करें, you do such a good job that the other peoples are compelled to appreciate you, right? Which is the better option? Appreciation के बाद काम अच्छा करें, या काम इतना अच्छा करें कि बाकी लोग हमें appreciate करने के लिए force हो जाए, right? So make your life, it's your decision. Be proactive, react with the help of your internal energies. Don't wait for the external energies to affect you. Be a proactive person. आगे जाके मुसीबत का सामना कीजिए, show it off, and then obviously you are going to be a successful person in your life. That is something which I have done throughout, which my life story also says the same thing. I've been doing everything proactively, even the time when this pandemic has come, the COVID has come. Before this, I used to do lots and lots of offline workshop, where I used to have workshops in lots of good hotels, where we used to have fantastic audiences. उनके जो चेहरे के expressions होते थे, उससे मुझे बहुत energy मिलती थी. लेकिन यहाँ पे आप लोगों में से मुझे किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है. I don't know how those people are reacting. But what I did, I started doing my certification on online programs. और धीरे-धीरे करते-करते आज ये स्थिति आ गई है कि I'm getting online programs day in and day out, right? So whatever the circumstances are, you should not allow them to make any difference to you. So you take care of the circumstances, you take charge of the circumstances rather than circumstances taking charge of you. That's what proactivism is, right? So with that, I end this session, and I will like to invite questions from lots and lots of participants. So because questioning is very important when it comes to online sessions. So I'll stop sharing this, and I'll ask you to please ask me questions about it. Anupma, what I'll do, I'll make you the co-host. Okay. And so that they can ask me the questions, you can unmute them. Yeah. Great. So
I've made you the host. Great. You can ask them to unmute and they can ask their questions. Yeah. So, any questions, please ask, because I think the easiest way to gain something is being inquisitive and finding your answers. So, you can also put your questions on the chat box. There's a chat from Mr. Dev Bhagwani. Proactive people believe in delayed gratification and reactive people believe in instant gratification. In fact, gratification is something which, if I'm thankful to you and I'm proactive, the moment I'm thankful, I'll say very much thanks to you, my profound gratitude to you. Rather than asking you for the gratification or gratitude, I'll be the first person who will do that. Some more questions. Questions are the best way to understand. Samiksha has a question. Sir, how to work when our motivation is low? What after one day? How to work when the motivation is low? Okay. So, Amiksha, हम दो तरीके से काम करते हैं. One is work religiously and one is work technically. तो जब हमारे दिन अच्छे होते हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम अपने आप काम करते ही करते हैं. लेकिन कभी-कभी क्या होता है, when the motivation is low, जब हमारा मन काम करने का मन नहीं हो रहा होता है, तो हम एकदम से हमारा जो अपना लेवल होता है वो डाउन हो जाता है. तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? We should break our job into small tasks. For instance, हम सुबह उठे, early in the morning, we wake up, and we don't want to go to institute or we don't want to go to the office. Irrespective of that, we'll definitely take the bath. Perhaps after taking the bath, what will happen? You will say, कि चलिए ठीक है, let's do the breakfast. Breakfast कर लिया. Breakfast करने के बाद थोड़ा थोड़ा मन अपने आप बनने लगेगा, and you will see that the things you will initially जो motivation low था वो अपने आप थोड़ा थोड़ा बेहतर होने लगेगा, and you will start to do the job. इसको मैं एक example से समझ सकते हैं. For instance, what's the name of the girl, Anupma? Samiksha. Samiksha. Samiksha, do you have got a car or you've got a bike? What do you drive? Samiksha, you can unmute yourself. Samiksha, can talk to me directly. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Samiksha. Yes. Sir, I drive scooty. Scooty, okay. Yes, so do you drive in the evening or night? So शाम को या रात में drive करते हैं आप लोग कभी-कभी? Okay. So tell me. Sir, evening में. Evening में, okay. So evening में आपको अपनी स्कूटी की हेडलाइट ऑन करनी पड़ती होगी? Yes? Yes, sir. तो कितने डिस्टेंस तक उसकी हेडलाइट की रोशनी जाती है? So minimum 2 meters. So 2 meters at least. Approximately 10 to 15 meters, right? उसके आगे darkness होती है. So do you stop because of the darkness there? You carry on. Yeah. Right? And the further you carry on, further light also carries on. Right? And with the help of that 10 to 20 meters of light, you travel 2 kilometers, 3 kilometers, 5 kilometers, and 10 kilometers. Absolutely. Right? So when you don't stop because of the darkness outside after 20 meters, away from further 20 meters, it can be anything, but you don't stop. So whenever you feel demotivated, there's a darkness as to what will happen. So start doing the things which you're supposed to do, and just do those things, and gradually that light and clarity will take you forward. धीरे-धीरे वो आपको आगे बढ़ाती जाएगी, और आप अपने आप जब आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलने लगेगी, थोड़े से काम आपके होने लगेंगे, आपका मोटिवेशन अपने आप वापस आ जाएगा, and you will start be bang on the track. Definitely, sir. Thank you so much. Thank you, Samiksha. I hope I was able to answer your question reasonably. Yes, sir. Perfectly. Great. So that's how Samiksha got her question answered. So others can also get their questions answered. Come on, who's the next? Okay. What is the fine line that defines the difference between being impulsive and being proactive? Okay.
being impulsive, we are actually reactive. जैसे मैंने आपको बताया, whenever the stimuli is there and there is a response, there is some freedom of choice. When we think and respond to it, that is being proactive. And when we just react to it without any thinking, that's called impulsive. For instance, if you go to a provision store, you find a chocolate there, you felt like having a chocolate, that was an impulsive purchase. But when you go to the same store and you find a chocolate there and you thought that, okay, the chocolate is there, my son in my house likes chocolate, my wife also likes chocolate, so I should buy a few chocolates for them. So that's some bit of planning is there, it becomes proactive, and without any planning, it becomes reactive. Okay, Anna, I think I was able to answer your question. Rachit Thakur asked, is waiting equal to patience? Waiting is a different thing, and a patience is a different thing. Patience comes out, for instance, if we take, we try to understand with the help of cricketing analogy, right? So, for instance, this is a COVID time, and in COVID times, there are certain things which are dangerous. For instance, going out and meeting people. So that's something in which you have to have patience. But there are certain things like upgrading yourself, making yourself better. I'll tell you one very important thing. There is an index which is displayed by UNESCO every year. That index is called Happiness Index. And our country, India, is ranking 144 in Happiness Index, right? And apart from that, there's another index which is displayed by UNESCO, that is called Skill Index. In Skill Index also, we are only have 2% manpower which are skilled, right? So happiness, and all those countries which are very high on Happiness Index, they have got very high skill, they are very high on Skill Index as well, which shows the people who are happier, they are skilled, or the other way around, people who are skilled, they are more happier, right? So if you want to improve yourself, you should improve yourself in a skill. And what are those skills? Number one, knowledge. Number two, obviously the skill. And number three, the attitude. So upgrade yourself on these three things: knowledge, skill, and attitude. You will definitely find yourself in a better platform. एक बड़ा छोटा सा मैं आपको mathematical calculation देता हूँ. And I'm going to ask you this question. Can I, Rachit Thakur? Rachit, can you unmute yourself? Yes, sir. Rachit, एक क्वेश्चन आपसे मैथमेटिक्स का पूछा हूँ, सिंपल सा. 1 to the square of 365 कितना होता है? Anyone who can answer this? 1 to the square of 365. Anuma, can you answer 1 to the square of 365? Yeah, Sakshi has given the answer. Yes, 1 to the square of 365 is 1 only, right? Now, the more difficult question. 1.01 to the square of 365. ये कितना होता है? One to the square of 365 is 1. Agreed. 1.01 to the power of 365 कितना होता है? I'll tell you. 1.01 to the power of 365 is equal to 37.01. मैंने क्यों बताया आपको? Because 1 is something जो आज आप हैं. And if you are going to be the same throughout the 365 days of the year. 365 मैंने इसलिए डाला because there are 365 days in a year. So if you are going to be the same person across the year, you're the same one person across 365 days, you will be just the same person at the end of the year also. But if you just do a fraction of improvement on daily basis, that is 1.01. You just make yourself fractionally better. You just learn one skill one day.
You just learn how to communicate in a better way. You just learn a thing like how to say no to people. You just learn something like how to be good to a customer. You just learn something about customer centricity, or you learn something about leadership skills, right? Just one fraction of a thing, right? So 1.01 to the power of 365. So you will observe that after 365 days, you are 37 times of what you are actually at the start of the year, right? So you can surprise yourself even. So gradual and consistent upgradation of your own self will make you a better human being. That's what I mean when I say proactive. You don't have to wait for Anupma ji to tell you that you have to upgrade yourself. You don't have to wait for Mehndi sir to tell you that you have to upgrade yourself. Just upgrade yourself fractionally, and it will just take 1 hour of a day. Give yourself 1 hour of a day, upgrade yourself fractionally, and after a period of time, you will see that you are a different version of yourself. That's what I mean when I say proactive. Okay. Let's see. Then Shagun says, sir, sometimes we keep trying so hard for things to achieve, but after a long time, we won't see positive responses from our own work. Sir, my question is that how to motivate your own self to work efficiently to achieve targets to get success in positive manner in future. Shagun, बहुत छोटे सा बात है. There are, whenever we do a task, उस task को हम दो हिस्सों में divide कर सकते हैं. One is your effort and the other is your result, right? Shagun, can you unmute yourself? क्या आप सुन सकते हैं मेरी बात? Unmute कर लें तो ज़्यादा मजा आएगा बात करने में, right? Yes, sir. Shagun, जब भी हम Yes, कोई काम करते हैं, there are two aspects of it. One is the effort and one is the result. My Yes, question sir. to you, tell me, which is in my control, the result or the effort? So the effort. Effort is in my control. So don't worry about Sir, the result. result. Result is not in my control. Result is in no one's control. Make your effort in such a fantastic manner that the result has to be good. It has to be in your favor. For instance, Shagun, I tell you one thing. I was coming to this workshop. Though I knew Anupma ji, I knew Mehndi Saab, but I didn't know any one of you. अगर मैं ये सोचता रहता, oh, नए लड़के हैं, it's almost 22 years old, what kind of impression these guys are going to have about me? मैं वहाँ पे बोलूँगा, किसी का चेहरा सुना दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा? वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? कोई सो रहा होगा, कोई लेट रहा होगा, कोई ये कर रहा होगा, कोई वो कर रहा होगा. तो अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो मैं कुछ कर पाऊंगा? Sorry, I'll not be able to do anything. What I can do, I can maximize my own efforts. I can better my own presentation. मैं उसमें कुछ अच्छे examples डाल सकता था, मैं उसमें कुछ और चीजें डाल सकता था, right? So the best thing which I can do is improve my efforts. And if your efforts are going to be fantastic, don't worry. Your result is definitely going to be fantastic. No one can take it away from you. Right, Shagun? I hope I was able to answer your question. Great, great, great. Then there's another question. Rudra Pratap Singh, is motivation necessary to do our job? Otherwise, we could understand doing work is worship for us. It's our duty to need of the motivation. When it comes to motivation, Rudra, there's not only one thing which motivates a person. Motivation doesn't mean ki shouting and saying, yeah, aag laga dunga, khoon se lag dunga kranti. That's not motivation. That's shouting. A few people get motivated from the work also. Success also motivates. If you're doing a work, a small success, for instance, there is a particular thing called dose of happiness. In that dose of happiness, the first D is about the endorphin. You know, the four hormones which give you happiness. So if you are able to complete a job in a good manner, that gives you happiness and that motivates you, right? So if you are doing your work in the right way, you are doing your work as a worship. If you are going to love your work, you are doing and going to accomplish your work, you are going to complete your work in the right way, that is going to motivate you. So as you said, the people who are motivated, they carry their weather along with them. They are not motivated by the weather. They are motivated from inside. अंदर से अगर सब बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है, right? I hope I was able to answer your question. Rudra,
Okay, I got another message. Yes, Rudra has said the message. Okay. Any other question? More you ask the questions, more you can reveal out of me. सागर मंथन आपको याद होगा, तो जितना सवाल आप पूछेंगे उतना ही मंथन होगा, जितना मंथन होगा उतनी चीजें बाहर निकल के आएंगी. Any questions? Questions? I'm the first one who has the first person in India who has done applied design thinking into tourism, right? It's a brilliant thought, and I think more of us should start following this. Design thinking. Yes, design thinking is something. थोड़ा सा बता दें what design thinking is. Design thinking is about when the जो professional designers होते हैं, like the people who design the metro, Lucknow metro जिन्होंने design किए, these guys are called professional designers. So when they design, when they do professional designing, there's certain strategy which they follow, right? तो उस strategy को हम लोग एक workshop के form में लाते हैं, and we जो strategy जो steps वो follow करते हैं, we use those strategies and steps to solve the problems which we face in day-to-day lives and in business areas. So industries और business में जो areas होते हैं, उनको हम उसके तरीके से solve करने के लिए जो problems को लाते हैं, उन problems को हम डिजाइन थिंकिंग कहते हैं, उस अप्रोच को हम डिजाइन थिंकिंग कहते हैं. इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. और एक बात मैं आप सब लोगों को जानना चाहूंगा कि जो हमारा अपना डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर आप देखें, एवरीथिंग इज अगर एक मैं आपसे सवाल पूछूं, there are three people, right? One is a BCom, one person who has done his BCom, other person is and he gets 15,000 rupees per month. Other person is a BCom who can speak English. Will he get more salary? Will he earn more out of the two? Answer in the chat box, yes or no. Can you answer in the chat box? One person is a BCom, the other person is a BCom who can also speak English. Who is going to earn more? किसकी तनख्वाह ज्यादा होगी? Obviously, second one, the person who can speak English as well. Okay. No, it's not necessary. Second guy. Yeah, it's not necessary. I'm talking about the probability and the chances. Okay. So, उसने क्या किया? उसने एक skill develop कर ली अपनी. Apart from being a normal BCom, now he has got a proficiency in English. एक तीसरा बंदा आया, इसने कहा, let's add one more skill to it. I'm a BCom. I can also speak English. I'm also a good salesperson. I'm an excellent salesperson. I've developed my skill sets in selling products and services to people. So who has got the highest chances and probabilities of earning most? One person is BCom, the other person is also good at English. The third person says, I'm a BCom, good at English, and I can also sell. The third person has got more chances. Then a fourth person comes. He says, I'm a BCom, I can speak English, I can also sell, and I've got leadership qualities also. So what is happening? Now this person is growing even more because he has got leadership qualities. The fourth one has got chances and probabilities of success even more. So what is happening here? The moment you are adding up the skills to yourself, so these people are adding the skills, definitely the fourth one now. Yes, Akanksha. So what is happening is now, every time you are adding a skill to yourself, you are improving your chances to be more successful. And what are you doing? You are just being proactive in adding those skills. That's what we say. If you want to earn more, please learn more, right? So with that, I come to an end of needs, requirements of a job, fulfillment with good adoptions, right?
Definitely, if we talk about one-to-one issues, that can be a different thing. But when we talk about a subjective matter, it's about the probabilities and the chances. Out of 100, 70 or 80 is a high probability, right? So when the people who are more skilled, they get more chances of doing better in life financially, right? So upgrade yourself, upskill yourself, be proactive in upskilling and upgrading yourself, learn more and earn more, and be happy, because skillful people are more happy. Thank you very much, and I end my session here. And thank you, Anupma, for giving me this opportunity. Thank you, Arvind, for sharing such beautiful thoughts with us today. I'm sure we all feel extremely motivated, even me, because sometimes we do get into a stage or a state, you can say, where we feel that what we are doing, our efforts are not being rewarded. But I think ultimately you have to keep making your efforts. You have to keep driving another 2 meters, another 20 meters, because the light is there. And ultimately, I think one day all our efforts will get answered with some kind of reward, some kind of maybe self-motivation itself is a huge thing. Being happy. India, I always felt was very high in happiness index, but then you've told us that it's like it ranks, I mean, it's 132nd in the happiness index. I think that's really not a We are 144 in the latest one which has come. Yeah. In fact, I can share that with you. Acha, the host, I've got a slide which shows that we are at 144 in happiness index. And skillful, if you talk about skillful, the top country which is the happiest country, that is Denmark, and their skilled manpower is approximately 51% as compared to 2% of India. So probably India also has a population issue that comes into it, the entire scenario. But irrespective of that, I think being happy, being motivated, self-motivated is very important. And Arvind, thank you for sharing that and for reminding us once again that we have to keep constantly putting in our efforts in whatever we do. And you still carry the same, the energy that was there. That it reminds me of Arvind then. And I'm so happy that you're here once again, and make this a habit, please. You're doing wonderful. You've introduced that wonderful course that I'm sure will do very well, design skills into tourism. That is excellent. I think these kind of skills, I think what you have inculcated in yourself, the skill, the ability to speak, the ability to understand, ability to react with, interact with people, give them, such kind of motivational thoughts that would probably energize them to do better in their lives. I think these youngsters today are facing a very challenging atmosphere because of the COVID situation. Our tourism industry has been very, sadly, one of the most, you can say it has been hit so severely that we face a challenge in getting our students placed. It is a huge thing, but it's not the end. It's never going to be the end. We will continue with our little light. So in the meanwhile, while we have this opportunity, while we are sitting at home, I think, Arvind, we will request you that you keep motivating people and students. I think what you should learn from this entire session today is that upgrade your skills. This is a great opportunity. Don't sit back at home and say that there's nothing else to do. Don't feel depressed, because that is a wrong thing to do right now. You can start upgrading yourself. There are so many online sessions that are going on. There are so many online courses that are going on. There are so many other things that are happening around you. So start doing and start improving on your skills. If I think communication today is one of the most strongly desired, asset that one can have when you face an interview. Start developing that. Another, I think I agree with Pradhan Mantri Narendra Modi that the hunar that you have to inculcate in yourself, make yourself more, Atmanirbhar. I love that idea. So I think entrepreneurship is the in thing right now. So there are so many startups that you can think of. And Arvind, thank you so much for giving us these little thoughts, to once again mix up all these things and think for ourselves. Think for ourselves, because if we are happy, we make people around us happy. I think that was the best thing that we have learned today. So be happy. And Arvind, please, this is not, make it a habit, I said. So keep it coming in once in a while. And I'm sure that once the COVID situation is over, you will have to come to the institute. It is your institute. You have been one of the founders. And yes, we used to have Kshitij and we used to participate with such enthusiasm. And
all the events and even the events that were organized by other institutions, tourism had a name then. Like it was like, oh, ye log aa gaye, fir se aa gaye, like pata nahi kya dhoom machayenge. So bring that spirit, rekindle yourself. I think you have we had an option that we used to come to college, and that was so exciting for us. There are so many other options available today. Entertainment is the key, it's the in thing, but still, when you are with friends and you're doing something together and achieving something together, I think that brings the greatest happiness in all our lives. So rekindle all those fires that are already there in each one of you. And Arvind, please do come to the institute. Sure. That will be my pleasure. And one more thing, since I like to tell you guys that I also write columns for news portals, as Anupama already knows, and I write a column every week. And so what I'm going to do, I'm going to leave my number in the chat box here. So if any students he wants to get through those columns, he or she can ask me for the columns over the WhatsApp. I'll provide those columns link to you, and you can read those columns. They are certain very valuable columns and definitely help you to make yourself a better human being. And that's what my contribution or my payback to the institute that can be. So I'm leaving my number at the chat box also. So anyone who wants to have an access to those columns, you can send a request to me. I'll do that. I'll share your columns also in the student groups. So Sure. dear students, one day and day one. So start your day one today. Thank you. Thank you for joining us. And Arvind, thank you once again for. Thank you. And thank you to all the students. Thank you.